What is social linguistic term? The term that we need to work out today is social linguistic. 20 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आने वाला है। या अगर आप इसके पार्ट्स की बात करें, if you talk about the part that been come in the language, dialect or register, that will confirm you will get in a paper. तो in both terms ये क्वेश्चन कंफर्म ही पेपर में आने वाला है। And those who are really very much worried about MEG4, they need to watch this class till end. यहां पे पहले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है दैट व्हाट इज सोशल लिंग्विस्टिक। सोशल लिंग्विस्टिक होता क्या है? द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड इज सोशल लिंग्विस्टिक किसको कहते हैं? एक सोसाइटी और लैंग्वेज के बीच की रिलेशनशिप को जो चीज हाईलाइट करती है, द थिंग दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज नोन एज टू बी सोशल लिंग्विस्टिक। अगर रियल टर्म्स में जाने, इट पेज अटेंशन सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज क्या है एंड हाउ इट वर्क्स. So it discusses the relation between language and society. That's very clear. And how can we rule out the certain things? अब हमने कहा सर इसमें हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं? We're going to discuss the language, the dialect, the language variation, social stratification, and then register. So why are we not going to write down or have seen the social stratification and variety of language here? क्योंकि वो इसी का पार्ट है. When I'm going to explain that things, आपको easily समझ आएगा. The first thing is language. Language होता क्या? The term that was being known as two-way language is a term that been defined by using a certain norms of symbols to clear your gestures. आप अपने gestures दूसरों को show करने के लिए जिस को यूज करते हैं that is language. तो language in main terms हम बोल सकते हैं language is used for the medium of communication. It's a thing that can be used for the medium of communication and have many varieties. So what is many varieties? Seriously, the language vary. एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से डेफिनेटली वेरी करती है, उसके डायलेक्ट्स अलग हैं, फेजेस अलग हैं. सर यू यूज द वर्ड डायलेक्ट्स जो आपने अभी एक्सप्लेन करना है. दैट्स व्हाई आई पर्पसली यूज द वर्ड डायलेक्ट्स है. अब आपको समझना जरूरी है कि लैंग्वेज है क्या, कैसे डील करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझना है. These language varieties created by the existence of social stratification. Now I use the word social stratification. The different layers of the same language, मतलब अलग-अलग पार्ट्स में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया. The division of some other things. तो social stratification in form of language or the speakers that involved in interactions. So speakers, कई speakers हैं जो लैंग्वेज को यूज करते हैं with a medium of communication. उसको कैसे डील कर पाते हैं? Those who are watching my video classes, आप being disturbed सर, कई बार आप इंग्लिश यूज करते हैं, कई बार हिंदी यूज करते हैं, and somehow you use the certain Punjabi words too. The reason what I use, I try to communicate with each and every viewers of mine. तो उनको चीज समझ आनी चाहिए. They need to grab that things. तो that is social stratification. ये एग्जांपल हो गया हमारा social stratification का. और यहाँ पे मैंने आपको एक डायलेक्ट का एग्जांपल भी दे दिया. So the language varieties can be in form of dialect and register. और यहाँ दो चीजें हो गई, एक डायलेक्ट और दूसरा रजिस्टर. तो you can say the language मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. होप आपको समझ में आया. Then dialects, a variety of language that signify that where a person come from. एक आदमी कहाँ से आता है? The way he speaks. अच्छा, basically from the origin I'm a Punjabi guy, तो मैं बोलता हूँ ना पंजाबी, तो लोग उसको समझ पाते हैं easily. And those who are not able to grab it, they do have a question in their mind that what the words are being used only talked by that guy. नहीं समझ में आया क्या बोला उसने? तो सर डायलेक्ट, आपके बोलने से पता लगता है कि आप कहाँ से आए हैं. Your origin comes in front of others. The time you speak means they're going to recognize you belong to which community or which region. Concept clear हुआ हमारा? And then we'll come to the next phase, that is register. It's a variety of language used for a particular function. सर किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो चीज यूज करते हैं ना, उसको हम रजिस्टर बोलते हैं. आपने कहा रजिस्टर क्या है, कैसे डील करते हैं, अब इसको थोड़ा डिटेल में डालते हैं. The first thing, dialect. So a variety of language that was the signal from where a person come from. अब इसको थोड़ा समझते हैं. Dialect is a correlate, seriously, it's a correlate with such social factors. Certain social factors such as the social economic status that define your social economic status. कि आपका सोसाइटी में क्या स्टेटस है, एज, ऑक्यूपेशन ऑफ द स्पीकर, वो उसको बताता है. Dialect is a variety of particular language which is used by the particular group of the speaker that is a systematic way of founding a speech community. क्योंकि speech community है that form a register or region or a dialect. तीन चीजें क्लियर करता सर, मतलब उसने एक रजिस्टर क्लियर किया, एक सिम्बलाइज किया अपने आप को बाकियों से अलग कर दिया.
तो ये हमारा वो फेज हो गया जो डिफाइन करता है हाउ थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग। तो ये था डायलेक्ट के लिए। अब आते हैं रजिस्टर पे। सर रजिस्टर क्या है, कैसे समझते हैं? तो सोशल लिंग्विस्टिक की टर्म जहां हुई हमारे पास सोशल लिंग्विस्टिक टर्म दैट इन्वॉल्व्स रजिस्टर, लैंग्वेज, वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज एंड स्ट्रैटिफिकेशन। It do include the last word that is register। और रजिस्टर पेपर में भी कंफर्म पूछा जाता है सर डायरेक्ट और रजिस्टर में डिफरेंस भी आता है कि हमें वो डिफरेंस बताना है। इवन अगर आप लोग एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज वाली वीडियो देखी है जो मैंने लास्ट अभी डाली थी, उसमें मैंने कहा है कि आपको वो करना है। तो यहां हम समझते हैं रजिस्टर। अब वैरायटी दैट इज वेरिएशन, द वेरिएशन लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। रजिस्टर इज नोन एज द वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। It means that where language is used, you guys need to clear where language is used as a means of communication for certain purposes, कि इन जगहों पे यही लैंग्वेज बोलनी है। सीरियसली आई गो टू सर्टेन ऑफिस जहां पे लोगों से सिर्फ इंग्लिश ही आती थी, दे डोंट नो हैव एन आईडिया रिगार्डिंग हिंदी लैंग्वेज। तो मैं कैसे कम्युनिकेट करता? इन दैट टाइम आई हैव टू कम्युनिकेट विद देम इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। But whereas I'll go to certain Gurudwara and the people, those who are sitting there, just know one language, that's the Punjabi. In that terms, I have to use a certain Punjabi words to communicate with these people. तो सर यहाँ पे register matters to a function language or a function or variety of language that being used at that particular place. So in other words, we can say it entirely depends on the domain of language used. कि वहां कौन सा डोमेन यूज हुआ लैंग्वेज का। देन इट आल्सो फंक्शन द अदर कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच सिचुएशन सच एज अ फॉर्मल सेटिंग मे कंडीशन फॉर्मल रजिस्टर। अ फॉर्मल सेटिंग मींस सर वेरी वी फॉर्मल वेरी फॉर्मल वी हैव टू यूज अ सर्टेन फॉर्मल वर्ड्स विद अदर पीपल सो दे बी एबल टू ग्रैब व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्विंस देम और ट्राइंग टू से टू देम। देन सेकंडली द इनफॉर्मल सेटिंग मे बी रिफ्लेक्ट द कैजुअल रजिस्टर। So where we been sitting in a family or a friends group, we do use the non-formal, generally the informal register that indicates less formal vocabulary for the known standard features. So जिसमें कई standard features नहीं होंगे, such as greater instance of the systemized variable and so on, कई सारी चीजें। तो अगर तीनों को जम अप करके समझना हो कि क्लास में किन चीजों को हाईलाइट किया, हमने सोशल लिंग्विस्टिक की बात की, तो सर हमने 5 चीजें हाईलाइट की। The first सीरियसली लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज को डिफाइन किया, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज को हाईलाइट किया, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज क्या थी, कैसे डील करती, स्ट्रैटिफिकेशन लैंग्वेज को हाईलाइट किया कि किस तरह डिवीजन होता है, एंड देन वी विल कम टू द डायलेक्ट्स एंड द लास्ट टू रजिस्टर। मींस on a whole sum we mention about one thing that is language, how a language being used, इस लैंग्वेज को कैसे अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन करना है। आपने कहा सोशल लिंग्विस्टिक is like a chain. सोशल लिंग्विस्टिक, अब सोशल लिंग्विस्टिक को एक चेन की तरह समझना हो तो फर्स्ट पार्ट द लैंग्वेज। सब क्या पेपर में वैसे बना सकते हैं, यू कैन राइट ऑन दिस। हाँ, इट विल हैव अ ग्रेट इंप्रेशन ऑन योर रीडर, जो पढ़ेगा पेपर को उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लैंग्वेज के बाद वेराइटी, variation of language, yeah that's true, language, then we do have a variation language, and then we have stratification of language. Sir again what does mean by the stratification language? जहां हम लैंग्वेज को अलग अलग पार्ट्स में सब डिवाइड कर देते हैं। we divided the language to different parts, stratification language, and then we do have the dialects. Okay, I'm talking about India guys. इंडिया में हम अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं। आई बिलोंग टू न्यू दिल्ली, यू बिलोंग टू असम, एंड सम अदर बिलोंग टू वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, असम। Really, we do have a multi-purpose, also the multi-language country. Yeah, we do have, and I'm proud of it. अब यहाँ हमने कहा हमारी लैंग्वेज अलग अलग जगह वेरी करती है, तो सब डायलेक्ट है जिसको बोलने से हम पकड़े जाते हैं कि हम कहाँ बिलोंग करते हैं। North Indians do have a Punjabi as their first language. Seriously, वो उसको dominate करते हैं। With the South Indian, North East Indian or the West Indians have other languages, वो dialects को refer करते हैं।
When we do talk or communicate with other people, our dialects matter a lot. And then come up to the next phase, that is register. So it stands for the user language of particular function. कहां पे कौन सी लैंग्वेज यूज करें, हम सब कहीं से भी आते हैं, बट व्हेन वी ट्राई टू कम्युनिकेट विद ईच अदर on a formal stage, seriously, we use a code of conduct for a particular language. हम उस particular language के लिए code of conduct को use करते हैं, and that pattern is known as to register. वो कहलाता है register. तो ये जानना जरूरी था हमारी क्लास में, and I hope guys that you be able to crack the social linguistic concept in today's class. कि आपको समझ में आएगा सोशल लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट है क्या, कैसे यूज कर सकते हैं, इन व्हाट मैनर वी विल गोइंग टू ग्रैब मैक्सिमम फ्रॉम दिस. एंड वन मोर थिंग, दोज हु आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर जून अटेम्प्ट 2019, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट कैन बी एक्सपेक्टेड इन अ 20 मार्क क्वेश्चन, नहीं तो शॉर्ट नोट पे कंफर्म मिलने वाला है आपको. तो प्लीज इसको वर्कआउट करें, एंड दोज आर हैविंग द नोट्स, वो नोट्स को रूल आउट कर लेंगे कि कैसे ग्रैब करने हैं. एंड दोज डोंट हैव एनरोल, उनके लिए मेरा नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन गिवन है, आप वहां से व्हाट्सएप डाल सकते हैं. टिल देन कीप वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब. इफ यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच एंड शेयर, देन ऑनली.